Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. Assuming that the string is stretched, find the length of the string. Find the length of the string. Means what? A kite is flying at a height of 60 meters. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. Means if you assume that AB, if you assume that this is your BC and if you assume that this is your AC. A kite is flying at a height of 60 meters. Kite कहाँ पे है? That is the 60 meter. Means AB equals to, if you take, that is your 60 meter above the ground. The string is attached to the kite, is tied at the ground. Means BC आपका क्या है? Ground. And if you tie this, then if you have to find the length of the string, then if you have to find the length of the string, means that let BC be the horizontal ground. BC आपका क्या है? Horizontal ground and A be the position of the kite. This A be the position of the kite. And if you join this A and C, then if you get this length of this string, if you have to find the length of the string in such a way that this angle ACB, that is your 60 degree, means that triangle ABC is right angle triangle. It is right angle triangle. ये आपका कौन सा है? Right angle triangle. In such a way that this is your angle theta. ये आपका कितना है? BCA. Angle BCA या angle ACB, that is your equals to 60 degree. कितना है? 60 degree. That is your front side. This is your front side. But if you have to find the value of this AC means that के opposite क्या रहेगा? Of course hypotenuse. 90 के opposite hypotenuse. Mean front side is given and that hypotenuse is given. तो आपका रेशियो कौन सा आएगा? आपका रेशियो आएगा sin. Means if you take sin theta equals to opposite side divided by hypotenuse. Sin theta, what is the value of theta? 60 degree. Opposite side AB divided by hypotenuse AC. See here, that is your 60 degree. This is your front side या opposite side. 90 के opposite क्या रहेगा? Hypotenuse. Then sin 60 equals to AB divided by AC. Then sin 60 का value आपका √3/2. टेबल में बताया था √3/2. Then what is the value of AB? AB का value कितना है? 60 divided by AC. क्या किया मैंने? ये वैल्यू पुट अप कर दिया. sin 60 का वैल्यू √3/2. AB का वैल्यू कितना है आपका? 60. Then AC equals to 60 into 2 divided by √3. इस टेक्निक क्या? This AC divide में then multiplication. Left hand side multiplication.
2 डिवाइड में राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन, रूट 3 डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन में दैट इज डिवाइड। AC इक्वल्स टू वी राइट 120 डिवाइडेड बाय रूट 3। अब ये रूट 3 रैशनल नंबर है, देन हाउ टू कन्वर्ट दिस? AC equals to 120 into root 3 divided by root 3 into root 3, that is your rationalization। root 3 से मैंने डिवाइड किया, root 3 से मल्टीप्लाई किया, divide and multiply, then we get root 3, then tell me that root 3 3, मैंने बताया था अगर आपका root 2 क्या आता है, आपका 2 आता है, then root 3 3, AC equals to 120 into root 3 divided by 3, then AC equals to right 40 root 3। AC का वैल्यू कितना मिला आपको? 40 root 3, and that is your answer, the length of the string। AC means that length of the string, but that value of root 3 is also given, then we write AC equals to 40 into root 3 का वैल्यू कितना है? 1.73, then AC equals to this 0 as it is, 4 3s are 12, 4 7s are 28, 9, then 2, 4 1s are 4, 6, then we get 69.12। A storm broke a tree and the tree top rested 20 meters from the base of the tree, making an angle of 60 degrees with the horizontal। Find the height of the tree। Means if you consider this AB is your tree, AB is your tree, AB आपका tree, okay, and this BD is your horizontal line, BD is your horizontal line, then this tree break, यहाँ पे आपका break हो रहा है, this tree break, then it rested to this, in this tree यहाँ पे आपका break हो रहा है, break होने के बाद में this AC that is equals to CD, okay, AC equals to CD, then C, okay, ये आपका ट्री, okay। अभी ये पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, ये पॉइंट पे सी ये पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है और ये आपका ग्राउंड पोजीशन है, then it rests in this way, okay, सी। एक बार और बताता हूँ, this is your tree and this is your breaking point, this is your breaking point, देखो ये ब्रेकिंग पॉइंट है आपका, ये ब्रेक होने के बाद में that it rest, same procedure is, means this is your AC, that AC equals to CD, this AC equals to CD, that is equals to Y meter, AC equals to CD, Y meter, and this BD equals to 20, BC equals to X, BC equals to X। अभी this is your right angle triangle BCD, BCBD is a right angle triangle, is a right angle triangle, ये आपका right angle triangle, okay, this is your right angle triangle, then hypo आपका this is your Y means CD, Y CD, okay, then this is your front side and this is your adjacent side, then we get tan theta equals to opposite side divided by adjacent side, then tan, what is the value of theta? Theta का वैल्यू कितने है? 60 डिग्री, equals to opposite side x divided by adjacent side, this is your BD, then tan 60 root 3, yes, BD का वैल्यू 20, then we get 20 root 3 equals to x, that is the value of x। लेकिन आपको x फाइंड नहीं करने का, then we have to find this total height of that tree, if you have to find the total height of that tree, then AC भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, AC and CD both are same, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, this AC and CD, see here, AC फाइंड करने के लिए आपको y डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, y डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, देखो y means what? Adjacent side, y sorry hypotenuse, y means what? Hypotenuse, and BD is given, means hypo and adjacent side, hypo and adjacent side is given, then cos theta equals to adjacent side BD divided by hypotenuse CD, then cos 60 degree equals to BD, what is the value of BD? BD का वैल्यू कितना है? 20,
and what is the value of CD? CD का वैल्यू कितना है 1. Then cos 60 का वैल्यू आपका कितना आएगा? cos 60 आएगा 1/2 equals to 20 divided by 1. Then take cross multiplication, y equals to 20 into 2, then y equals to we get 40. y का वैल्यू कितना आ गया आपका 40. कैसे किया है? दिस cos 60 का वैल्यू आपका 1/2 है. sin 30 का वैल्यू कितना है? sin 30 का वैल्यू 1/2 है. then cos 60 का वैल्यू 1/2 then 20 hypotenuse y, then we get y 1 into y 20 into 2 40. then we get the total distance means BA equals to BC plus AC. BA equals to BC का वैल्यू आपके पास है 20√3 and AC का वैल्यू 40 means BA equals to 20√3. BA equals to 20√3 and this is your 40. See here, मैं एक बार और बताता हूँ. A storm broke a tree at the tree pots rested 20 meter from the base of the tree making an angle of 60 degree. ये एंगल आपका 60 है. ब्रेक होने के बाद में this BA represent this ट्री. यहाँ पे ब्रेक हो रहा है. ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे रेस्ट हो रहा है. रेस्ट होने के बाद में दिस वैल्यू इज गिवन. देन BD इक्वल्स टू 20 मीटर, BC इक्वल्स टू 8, CA इक्वल्स टू CD equals to y. This triangle CBD is the right angle triangle. Tan theta equals to opposite side divided by adjacent side. Then we find the value of x. Then we find the value of y. Then total BA equals to BC plus AC. 20√3 plus 40. ये आपका प्रॉब्लम था. This is ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. देन ये आता है ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन में आता है. फर्स्ट मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट किया. देन बेसिक मैंने पढ़ाया रिलेशन बिटवीन साइन कोसेक, रिलेशन बिटवीन कॉसेक, रिलेशन बिटवीन टैन कॉट. उसके बाद में आइडेंटिटी मैंने आपको बताया. देयर आर 3 आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. sin square theta plus cos square theta equals to 1 plus tan square theta equals to sec square theta, 1 plus cos square theta equals to cosec square theta. Then we start this cos 90 equals to this sin theta equals to cos 90 minus theta, cos theta equals to sin 90 minus theta, tan theta equals to cot 90 minus theta, cot theta equals to tan 90 minus theta. उसके बाद में in which quadrant which ratio is positive ये भी बताया. उसके बाद में फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज. देन प्रूफ मैंने एक्सप्लेन किया. उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के आज कुछ प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. लेकिन कल के डेट में जो होगा आपका, कल के डेट में मैं क्या करने वाला हूँ कि इससे थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम लेने वाला हूँ. नेक्स्ट इज दैट two poles of height 18 meter and 7 meter are erected on the ground. The length of the wire is fastened at their top in 22 meter. Find the angle made by the wire with horizontal. इसके पहले सेम प्रॉब्लम हो गया था. Then two poles of height 18 meter, two poles of height 18 meter and 7 meter, 18 meter and 7 meter. यहाँ पे मैं फर्स्ट पोल रिप्रेजेंट करता हूँ. This is your AB, this is your first pole and CD. This is your second pole. AB and CD दोनों का हाइट सेम है क्या? नहीं है. फर्स्ट पोल का हाइट कितना है? That is AB equals to we write two poles of height 18 meter and 7 meter. This is your 18, this is your 7. Of course ये small है 7 आएगा, ये 18 आएगा. This we write this is your AB represent the two poles. AB and DC represent two poles. Means AB is your first pole, CD is your second pole. AB is your first pole, CD is your second pole. AB equals to 18 meter and DC equals to 7 meter. Okay. Then BD is the wire joining the top of the two pole. ये टॉप ऑफ द टू पोल्स है. B एक पॉइंट है, D एक पॉइंट है. Then if you join this, BD is the wire joining the top of the two poles. यहाँ पे मैंने join किया है and in such way that BD equals to 22 means that length of the wire, that length of the wire means we consider this BD equals to 22. But this A, B, C, D, this A, B, C,
this CDEA, this we write AEDC is your rectangle in such a way that this AE equals to CD, that is equals to 7. इसका रीजन क्या है? अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल. दिस टोटल डिस्टेंस इज your 80 and this AE value of A is your 7. Okay, then we write AB equals to AE plus EB. इसके पीछे रीजन होगा AEB, means that 3 points are collinear. AEB, these 3 points are collinear. Value of AB is 18, A is 7. Then we have to find EB. ये प्लस में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, that is EB. Then value of EB equals to 11. EB का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? Okay, but if you have to find this angle theta, that is your front side and that is your hypotenuse. Height के साथ का hypotenuse है. Which ratio? ये आपका रेशियो कौन सा आएगा? sin theta equals to opposite side divided by hypotenuse. sin theta equals to opposite side आपका कौन सा है? This which is your opposite side? B. and hypotenuse कौन सा है आपका? BD. sin theta equals to B का वैल्यू 11, 22. sin theta equals to we get 1/2. कौन सा इसका वैल्यू 1/2 है? then sin theta equals to sin 30. दोनों साइड का निकाल लो वैल्यू में, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. और यही यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक है, फाइंड द एंगल बिटवीन मेड बाय द लाइन वायर विद दिस वैल्यू. मींस if you have to find this angle and this angle, that is equals to 30